Hello everyone, welcome to the third episode of Super Breakdown by Superhero Academy. This is Aditya Krishna Shrivastava. And we all are going to agree with the fact that Avengers Endgame एक epic culmination है उन 21 movies का that were released across more than a decade, जिसने $2 billion से भी ज़्यादा अर्न किए ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे. So you might be thinking कि डिज्नी अब फिर से री-रिलीज़ क्यों कर रहा है Avengers Endgame को after 2 months of its official release. So let's break it all down and see ऐसा क्या possible reason हो सकता है that they are re-releasing the film. Avengers Endgame के री-रिलीज का कनेक्शन मूवी के किसी भी कैरेक्टर से नहीं है. इनफैक्ट वो एक दूसरी ब्लॉकबस्टर मूवी से है जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एट द ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के लिस्ट में टॉप स्पॉट पर है. Tell me his name again. इन 2009 जेम्स कैमरॉन की एवाटार ने $2.7 बिलियन अर्न किए, जिससे वो बहुत ही इजीली हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम एट द ग्लोबल बॉक्स ऑफिस बन गई. ये रिकॉर्ड पूरे डेकेड तक मेंटेन रहा, बट नाउ इट सीम्स लाइक इट्स अबाउट टू एंड. एज एवेंजर्स एंडगेम मेड अ रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फास्टेस्ट फिल्म टू एवर सरपास $2 बिलियन मार्क, dominating even its predecessor Avengers Infinity War in just 11 days. But as new blockbuster रिलीज होने लगी, Avengers Endgame थिएटर से हटने लगी, due to which it wasn't able to achieve the title of highest grossing movies of all time at the global box office. और अब Avengers Endgame के री-रिलीज का हाइप क्रिएट करके ये बहुत ही क्लियर हो जाता है that Marvel wants Avengers Endgame to be at the top spot in the list of highest grossing movies of all time at the global box office. And this could be the most effective idea जिससे Avengers Endgame can surpass James Cameron Avatar. The fourth Avenger movie already has a run time of 3 hours जो कि अब री-रिलीज में और इंक्रीज हो जाएगा. बट ये सोच के मूवी देखने मत जाइएगा that you will get to see a full director's cut. मार्वल स्टूडियोज़ के प्रेसिडेंट केविन फाइगी के अकॉर्डिंग मूवी में कोई भी नए सीन्स नहीं होंगे बिफोर द क्रेडिट्स. एज स्क्रीन रैंट के साथ एक इंटरव्यू में फाइगी सेड, Endgame re-release is not an extended cut. But if you stay and watch the movie after the credits, there will be a deleted scene, a little tribute and few surprises. So it will not be a re-edited version of the film, as Feige ने ये भी बोला था that re-release of Avengers Endgame is bit of a marketing push with a few new things at the end of the movie. So उस नई फुटेज में क्या है ये तो 100% एक्यूरेसी के साथ हमें भी नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली उस री-रिलीज में एक डिलीटेड सीन हो सकता है जिसमें 13 रीजन्स वाई की कैथरीन लैंगफोर्ड है एज टोनीज ग्रोन अप डॉटर who gets to meet Tony Stark in the Orange Soul world after Tony snaps his finger. According to directors Joe and Anthony Russo, ये सीन डिलीट कर दिया गया था. एंड जो रूसो ने हैप्पी सैड कंफ्यूज पॉडकास्ट में ये भी बताया कि there was an idea that we had that Tony was going to go into a metaphysical base station that Thanos goes into when he snaps his finger, and that there was going to be a grown-up version of his daughter in that base station. We showed it to the test audience and it was really confusing for them. और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है that इसमें एक अनरिलीज सीक्वेंस हो लुइस का from the Ant-Man movie who will give us a recap of the entire MCU. Here's the deal. Just give me the facts. Just the facts. Only the facts. Breathe. Focus. Keep it simple. No doubt. Okay. जिसको केविन फाइगी ने भी कंफर्म किया था रेडिट के एक AMA सेशन में that this scene do existed. According to Kevin Feige, we did a special shoot of Luis recapping the entire 10-year history of the MCU for San Diego Comic-Con. I'm sure it's around somewhere, and these seems to be the most promising possibilities that can be added in the re-release version of Avengers Endgame. बाकी 100% कंफर्मेशन तो किसी को नहीं है कि मार्वल के री-रिलीज पैकेज में क्या होगा, बट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन बाय केविन फाइगी ये ऑडियंसेस की सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर देगा. ये अनाउंसमेंट इतनी सरप्राइजिंग इसलिए भी है बिकॉज एवेंजर्स एंड गेम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के कुछ दिन पहले ही री-रिलीज हो रही है. इससे मोस्ट प्रोबेबली एक बूस्ट भी मिल सकता है अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की मूवी फार फ्रॉम होम को. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट मार्वल कोई नई मूवी रिलीज कर रही है अगेंस्ट इट्स बिगेस्ट परफॉर्मर्स. As in 2018, Black Panther और Infinity War were running concurrently in the theaters. उन दोनों मूवीज़ ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे बिना एक दूसरे के बिजनेस को इम्पैक्ट किए हुए. सेम गोज फॉर कैप्टन मार्वल विच वॉज रिलीज अ मंथ बिफोर एवेंजर्स एंड गेम. एवेंजर्स एंड गेम को री-रिलीज करने से मूवी फिर से न्यूज़ में आ जाएगी, मेकिंग हेडलाइंस ऑल ओवर द इंटरनेट, और ऑडियंसेस फेज 3 के फाइनल मूवी के लिए फिर से प्रिपेयर हो जाएंगी. ऐसा करने से ब्रांड नेम भी न्यूज़ में रहेगा अंटिल द जुलाई सैन डिएगो कॉमिक-कॉन एंड डिज्नीज D23 एक्सपो इन अगस्त, जिसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल मेक सम बिग अनाउंसमेंट्स. सो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सुपर हीरो एरा कब खत्म होगा, देन में भी शायद आपको इससे यूज टू होना पड़े बिकॉज इट माइट नेवर विल. वाइल सम फैंस का बहुत ही इंथुजियास्टिक रिएक्शन था इस री-रिलीज को लेके, but on the other side some fans also had a very cynical view over it. Especially Feige himself said
The re-release is more of a marketing thing than anything else. But कुछ दिन पहले एंथनी रूसो ने ये भी कहा था IndieWire से that they weren't focused on the battle of the highest grossing film between Avatar and Avengers Endgame. But we know that re-release version of Avengers Endgame in theaters for a week or enthusiastic Marvel fans will all it takes to close the gap between Avengers Endgame and Avatar. और अगर ऐसा हुआ तो who will win? Fox के मर्जर के बाद अब डिज्नी सिर्फ मार्वल को ओन नहीं करती, अब उसमें Avatar भी आ जाती है. तो कंपनी के पास ऑलरेडी 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रही हैं. So comment down below and let us know that ऐसा कौन सा sequence है which you would love to see in the re-release of the movie, whether it be Lewis recapping the whole MCU or an hand-to-hand battle of Hulk with Thanos. For some more super content, you can even follow us on Twitter, Instagram, Facebook and Pinterest. Don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you never miss a video by Superhero Academy. Thank you for joining us. This is me, Aditya Krishna Srivastava, signing off. Stay super, stay strong.